Good evening, everyone. This is Prosenjit and welcome you all to my YouTube channel. Today, in this wonderful evening, I'm going to explain one of the most beautiful poems of Class 11 Alternative English, Once Upon a Time, by Gabriel Okara. Now, the pronunciation of, say, Gbain, if you have seen, say it will be Bain Okara. He's a Nigerian poet. Being an African, he has observed and seen and witnessed the cultural differences with the touch of the modernism and the Western touch of the, in culture, tradition, language, lifestyle. So he has been one of those poets who has been completely uninfluential from the other modern English poets and writers. He is a great novelist, poet, writer that he observed and has seen a great change in the culture and the traditional beliefs and faiths and living styles of African people, the change in African culture and custom, that he wants to describe the change in his culture, change in the different ways of outlook and thinking and traditional approaches. So he wants to revolt. He wants a kind of revolutionary thought that comes out of his mind, and tries to make his people of his culture, the African people, to get back those etiquettes and beautiful, the charming, enchanting, charming approaches and the beauties of characters and the behaviors of African people that are missing now. He wants to describe through this beautiful poem how, with the change of generation, how people change, living change, thinking change, everything has changed. He throw a conversation between a father and a son. A father tells his son how many changes have come in the modern society with the different kinds of changes in time, with the span of time, with the roll of time. He wants to make the people understand what is it. So, my dear students, let us move into the different paragraphs. First of all, we must understand the rhetorical devices that we are going to study in it. First of all, the rhetorical device, if you look at the poem, you will find out the alliteration, as I told many times in the previous videos, says that alliteration is the repetition of the similar letter, the consonant sound in a line of a poem, one again and again. Example, as I gave you earlier, in one of the greatest poems by Rabindranath Tagore, where the mind is without fear and the head is held high. H, head is held high. So H, this is called repetition. In this poem you have, I'm using my laptop as I don't have the book, you can, as I told in the previous video as well. Hands without hurt and these muting, things saw me, son. See the lines S-H, S-O, so, S-H-O, S-S, repetition of the similar letter. So, show me, son. The repetition of the similar letter S is called the alliteration here. Now, next we have caesura, which is often not discussed and talked about in poem. Caesura is like a, you can see in the screen, you can find out. Caesura is something like, is a break in a line where the reader pauses. Sometimes, often it is used a kind of explanations, maybe dash, maybe a kind of what is a hyphen can be given. So a gap is given, a pause is given. Literally, caesura is a kind of punctuation mark, you can say, in the poetic language. The poet often uses this one. You might have seen in the different poems as well. If you see the stanza, a line of the poem, feel at home, then mark of exclamation. Come again, mark of exclamation. When there is a sudden pause in a sentence of a poem, that's called caesura. You have, they say, and when I come, say then comma. So often it is not used, but often it is not discussed in poems. Often we don't pay attention to this kind of, beautiful, the rhetorical devices the poet uses. Moving forward, we have in this poem, it's called Enjambment. Enjambment, in the previous poem also I explained in the video, enjambment is something like that. When a line of a poem continues and it ends to the second or the third line of the poem. One line, often we see in the poem, we have rhyming scheme. For example, twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, star, are. It's a rhyming scheme, A,
in this poem you will hardly find any rhyming scheme. Now why it is, let's say, and I have learned to laugh with only my teeth and shake hands without my heart. Now, and the line starts in the first and ends on the third. That's called enjambment. ENJAMBAMENT. Enjambment. Now, moving forward, we have simile. Simile, as I told you many times, is the similarity shown between two different persons, places, objects, things with the help of as and like. Say, she is as beautiful as a princess. She is as beautiful as a princess. Now, similarity of beauty of the two different persons has been shown here with she and princess with the help of as. Then sometimes we have like. He is like a brave lion. He is like a brave lion. So, he and lion similarity has been shown with the help of like. That's called simile. And in this poem, the most beautiful fact is we have metaphor. Metaphor is called applied simile, where the two different places, objects, things, ideas, persons, where similarity will be shown without the help of like and as. We will not find here as and like. For example, she is as beautiful as a princess. Here, similarity shown with the help of as, that's called simile. If I remove as, she is a beautiful princess, then what do I get? She is a beautiful princess, what do I get? It is very simple. I get here similarity between she and princess with the help of like and as. That's called metaphor. Here is a beautiful metaphoric comparison shown between the two different generations. Generation of a father and a generation of a son. Two comparison has been shown. A beautiful comparison has been shown. Then today now I am going to explain and we are going to enjoy this beautiful poem. So here the poet Gabriel Okara, he presents a father as a speaker in the poem, and the father describes his all pain. He himself wants to express the pain that he has. In the African society, with the touch of the Western culture and Western living style, they lost their culture, they lost their ways and values, the traditional values. Most it is often it is seen in our India, even as a country. We are very much mostly influenced by the Western touch, and we less get touch with the Indian culture. हम सोचते हैं कि Indian culture को follow करेंगे तो शायद हम देहात लगेंगे, modern नहीं लगेंगे, smart नहीं लगेंगे. अगर हम English बोलेंगे, अगर हम English culture को follow करेंगे, विदेशी culture को follow करेंगे तो हम ज़्यादा smart दिखेंगे. सोचने वाली बात है. अगर विदेश का फॉलो करना है तो सिर्फ उनके छोटे कपड़े पहनने वाले को फॉलो ना करते हुए, उनके दारू पीने वाले को फॉलो ना करते हुए, उनके अच्छे गुणों को फॉलो कीजिए. अच्छे गुणों का फॉलो ये करना कि ये लोग धर्म लेके लड़ते नहीं है जो हम करते हैं. छोटी छोटी बात में दूसरों की चुगली नहीं करते हम करते हैं. वो डेवलपमेंट में कितने आगे हैं, उनका डेवलपमेंट कितना आगे है, उसमें हमें ध्यान देना चाहिए. हमारा पॉपुलेशन में कितना आगे है, हम उसमें ध्यान दे रहे हैं. हम उनके प्रोडक्टिव चीज़ों पे ध्यान. वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टू द प्रोडक्टिव एंड कंड्यूसिव एक्टिविटीज ऑफ द पीपल ऑफ द वेस्टर्न कल्चर, रादर वी आर फॉलोइंग द अगली थिंग्स ऑफ द वेस्टर्न कल्चर. तो याद रखिए, रिवॉल्वर, पिस्तौल या ब्लेड या माचिस गलत नहीं है, उसको प्रयोग करने वाले गलत हैं. उसको किस प्रकार के यूज किया जाता है, दैट इज रॉन्ग. आई कैन यूज अ मैच बॉक्स और अ मैच स्टिक टू लाइट अप अ कैंडल दैट गिव्स अस लाइट, दैट रिमूव्स द डार्कनेस. एट द सेम टाइम द मैच स्टिक can be burnt a human body, can burn a human body. That depends upon us how we use it. So let us move into that. We must respect and observe and preserve our culture and tradition with the modern education. हम सीखेंगे modern education को, हर जगह की भाषा को सीखेंगे, but अपनी culture और भाषा को हम नहीं भूलेंगे. यही ये father he wants to say here. He describes the beautiful poem through that he says that a father says to his son, once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes. You must have seen the people, those who laugh real, जो original हंसते हैं, a kind of spark you can see and a glow you can see in their eyes. जो दिल से खुश होते हैं, when they smile, आंखें बोलती हैं, आंखों में खुशी दिखाई देती है. जो डुप्लीकेट है, which is not real and a fake and a crocodile's tear, it can easily be identified. It happens. But now they only laugh with their teeth.
while their eyes block whole eyes. Search behind my shadow. The line has spectated the heart. The father said, once upon a time, there was a time, my dear son, when the people of those generations used to smile with their heart and laugh with their heart. हंसते थे, खुशी से, दिल से. Now with the heart and the laugh with the eyes, उनकी हंसी, उनकी खुशी, उनकी आंखों में दिखाई देती थी. But now, अभी आजकल के लोग, they laugh with the teeth, दांत दिखाकर हंसना. This is duplicate smile. Duplicate smile. That means हम अंदर से खुश नहीं है, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. On eyes block. देखिए, अगर if you have the cube of eyes, देखने में गीला लगता है, पर वो ओरिजिनल आंख तो नहीं है, वो पिघल जाती है, वो बर्फ पिघल जाती है. Not real. That means the unreal emotion we are showing, the unreal love and respect and love we are trying to show that we are very much happy, but we aren't. Now, moving forward, the father said, there was a time indeed. They used to shake their hands with their heart. कुछ तरीके हैं हाथ मिलाने के. हम दोस्तों से जिसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जब we meet, we like shake our hands with, how are you, my friend? And nowadays, a rich man meeting his old friend, how are you? The way he looks like, how are you? How was that? Oh, fine. आजकल कहाँ रहते हो? So a kind of like, मिलकर बहुत अच्छा लगा. नहीं, rich friend मिलकर बहुत अच्छा लगा. What kind of अच्छा लगा भाई this one? So क्या होता है, बहुत सारे समाज में आपने देखा होगा इस प्रकार के लोग. अगर दो दोस्त हैं क्लासमेट, एक अमीर हो गया, गरीब हो गया, तो अमीर को देखो बात करने का तरीका बड़ा आसान है. जब दुकान से कोई सामान लेगा, पैसे यहाँ पे रखे, वो देना, ये अमीर कुछ, आई एम नॉट सेइंग ऑल, कुछ पीपल आर, सम पीपल आर देयर जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित नहीं है. अमीर आदमी या फिर जो गलत आदमी, जो आजकल के लोगों को, जनरेशन का पोएट ट्राइज टू से दैट सम पीपल आर देयर, दे लाइक एक्ट लाइक दिस. There was indeed a time where people shake their hands. Hi, दोस्त कैसे हो? Shaking the hand with the heart. So happy to meet a friend. Hi friend, how are you? Nowadays what happened? Those days are gone. Father says, but days are gone, my son. Now they shake their hands without hurt, while their left hand search my empty pocket. Now, आजकल अगर कोई हाथ मिलाता है तो स्वार्थ से, एक हाथ यहाँ रहता है तो दूसरा हाथ पॉकेट ढूंढता है. अर्थात हम उसी लोगों से मिलते और हाथ मिलाते हैं जिनका फाइनेंशियल कंडीशन इज वेरी साउंड एंड सॉलिड. उसी को अपना दिखाते हैं, वाओ नाइस टू मीट यू. दैट मीन्स नाउअडेज पीपल्स, द पोएट सेज दैट people during those days used to shake hand with the heart, with loving expression. Nowadays, if people shake their hand, what they do, they only shake hand if they have any intention behind and a walk behind. And अगर कोई स्वार्थ जुड़ा है किसी व्यक्ति के साथ, स्वार्थ से ही हाथ मिलाता है. It happened to me in many times in my life. I can recall my those days. ऐसे भी समय था, कुछ लोग आके वो, सर आप भगवान हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, आपके बिना मेरा बेटा ये नहीं होगा, आपके बिना, ये बहुत कुछ हो चुका है. जैसे एग्ज़ाम पास हो जाता है, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, एग्ज़ाम के बाद वो भगवान ढूंढ के नहीं मिलता है. तो इट हैपन्स लाइक sometimes they treat you like a god, sometimes they treat you like a very important person. Suddenly these people गायब हो जाते हैं, इनके सिंग निकल आते हैं, उड़ के चले जाते हैं. तो वो भगवान आजकल कहाँ पे दिखाई देता मालूम नहीं पड़ता. तो इट हैपन्स. स्वार्थ के साथ बहुत सारे मैंने अपने 16 साल के करियर में बहुत ज़्यादा देखा है. सो कुछ आकर बोलते हैं, नो 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 सर, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे. तो इट हैपन्स लाइक. समय के साथ साथ देखो, अगर मैं आज मेरे टीचर्स के साथ भी कनेक्टेड नहीं हूँ, आई एम नॉट इन टच विद माई टीचर्स. हाउ टू गेट इन टच? They are busy in their life. I am also busy in their life. So everyone has their own. Like sometimes whenever I meet, I never forget to touch the feet of my teacher. So this is my something only gratitude I can show to my teachers. So that is the generation gap. Maybe my teacher also sometimes say कि कैसा दिन आ गया, पहले ऐसा होता था, आज ऐसा हो रहा है. Now I am saying मेरे साथ भी कभी ऐसा होता था, अभी ऐसा हो रहा है. 15 साल 16 साल में मैंने generations को बदलते हुए देखा है. So मेरे टीचर्स ने तो और भी ज़्यादा देखा हो. So we can see the gap, generation gap, how people change with the time. कल जो भगवान था, आज पता नहीं कहाँ है, ढूंढ के नहीं मिलता. तो it happens. कल जो जिसको हम दोस्त, पिता, फ्रेंड बोलते थे, अचानक वो गायब हो जाता है. स्वार्थ से जुड़े हुए लोग ज़्यादा मिलेंगे. Mostly people are found completely selfish. They need help and work from you. You are a god to them, poet says.
and suddenly the God changes, and because they start criticizing you, आपकी गलतियां ढूंढना शुरू कर देते हैं कि आपने ये किया, वो किया, ये किया. We forgot those days कि जिस व्यक्ति ने आपको चलना सिखाया उसकी क्रिटिसाइज करना. The father taught you how to walk, now you are criticizing father. I gave an example one day, beautiful, like एक लड़का दोस्त, एक लड़की का दोस्त है. लड़की ने एक दिन मैं एग्जाम घर पे बुलाया उसको, why don't you come to my home, let us have a practice of a sum. So लड़का गया सुबह, and by the time the girl, that girl came out from the washroom and said, please you sit, I'm coming. तब घर पे कोई नहीं था. Unfortunately, जब लड़के ने कहा you sit, I'm coming, she came out just from the washroom, नहा कर आई. Just try to understand. And वो लड़की स्लिप खाकर गिर जाती है, सिर पे टक लग जाता है. तो when she bangs her head someone on the wall on the roof, तो लड़के दोस्त को क्या करना चाहिए था? भाग जाना चाहिए था ना, उसको उठाना चाहिए. इमेजिन उसी लड़के ने जाकर उस लड़की को उठाया, बिस्तर पर रखा. जस्ट जब उठाकर बिस्तर पर रखा, बाय द टाइम कोई एंट्री मारता है तो जिसने देखा वो क्या देखा? लड़की गीले कपड़े में बाथरूम से आकर है और वो उसको उठाकर ऊपर से ऐसे करके बैंड हुआ है. तो देखने वाले चीज़ भी गलत हो सकता है, हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए. हम तो सुनी बातों पर विश्वास करके चले जाते हैं. कभी कभी जो दिखाई देता है वो भी गलत हो सकता है. हमारी सोच पर निर्भर करता है हम क्या सोच रहे हैं. हमारे आँखों पर, दिल पर, दिमाग पर जोर डालना चाहिए. हम जो सुनकर बिलीव कर लेते हैं, कभी कभी तो देखने वाली बातें भी गलत हो सकती है. So, culture and your education works. So that's why let us move forward. It is not connected with the point, but somehow it is connected. So I express it as a teacher. I have been working in this wonderful profession for long. So I have been the part of this beautiful poem. So nowadays they don't shake their hands. They shake their hands only when the another hand is in the pocket. That means swarth. That means they search your empty pocket or full pocket is there or not. That means say when you come out of the home, जब घर से बाहर निकलोगे तो पॉकेट में थोड़ा वजन रखा करना. वजन नहीं तो हवा से उड़ा देगा शरीर को. I hope you have understood what I mean. Moving forward, Father said, feel at home, come again. Feel at home, come again. They say, and when I come again and feel at home once or twice, there will be no thrice. For then I find doors shut on me. Beautiful lines. आजकल के लोग, the father says, the people are there, they say that feel at home. अपनी घर की तरह फील कीजिए. be comfortable. feel at home मतलब comfortable. कभी कोई मेहमान हमारे घर में आता था, प्लीज फील एट होम, अपने घर जैसे सोचिए. तो और जाते वक्त प्लीज कम अगेन, दोबारा आइएगा. Nowadays, if I feel at home and I come back again, on the second and the third day, the doors are shut. So it happens, the poet says that. पुराने दिनों में ऐसा नहीं हुआ करता था. People used to welcome you with the core of the heart. Now the people completely have changed and they say, feel at home, they say, but they don't mean it. Come home, they say, but they don't mean it nowadays. And the second and the third time when you go, the doors are shut. So that's what the poet wants to say here. So I have learned many things, son. Father says that because the generation changed, people changed, the thinking changed, ways changed. Now the father said, so I have learned many things, son. बहुत सारे चीज़ों को मैंने सीख लिया बेटा. I have learned to wear many faces like dresses. कपड़ों की तरह मैंने कई चेहरे पहनना सीख लिया. कौन सा? Home face, office face, street face, host face, cocktail face, with all their comforting smiles like a fixed portrait smile. मैंने झूठी हंसी जो है मैंने सीख ली है, वो पहन ली है. मैंने मुखौटा लगा लिया है. I have worn a mask of duplicate face, an unreal, fake, fabricated face. Fabricated, which is not real, unreal. ऊपर fabric लगा हुआ है. The poet says that, son, I have learned to wear the different faces. If I go to home, I wear home face. Then I go to office, I wear office face. Then street, host, cocktail, different faces I have learned to wear because these are not my real faces. My real face should be one. इंसान का एक चेहरा होना चाहिए, कहीं नहीं. तो हम इमेजिनेशन करते हैं, परसीव करते हैं, सोचते हैं, समझ लेते हैं, दूसरों के बारे में जजमेंट करने लग जाते हैं. When you start judging other, when you are being judged by other, जब आप गलत हो दूसरों को आप गलत सोचना शुरू कर देते हो. सोच पे काबू करना सीखना बहुत ज़रूरी है. जो दिखाई देता है
वो भी गलत हो सकता है, सुनाई देने वाली बात तो बहुत दूर की बात है। नाउ different type of faces he poet wears, different type of faces he has learned to wear. उसने कहा कि कई प्रकार के चेहरा मैंने पहनना सीख लिया है। कॉकटेल फेस, पार्टी फेस, होस्ट फेस, जब मैं मेहमान नवाजी करता हूँ तो चेहरा, ओ प्लीज़ आइए ना, बैठिए ना, लेकिन मन से कुछ बोला जल्दी जाइए ना, तेल थोड़ा बिजली बचेगा। कोई मेहमान आ गया, ओ प्लीज़ कम कम कम, प्लीज़ हैव अ सीट, आई गेस फिर आ गया दोबारा, चाय पानी पिलाना पड़ेगा। सो दिस काइंड ऑफ thought comes. Yeah, point wants to say that main people, more generation have completely changed. They don't mean what they want to say. Now, and moving forward, say I have learned to laugh with only my teeth. मैंने भी हंसना सीख लिया बेटा, जो दांत दिखाकर हंसना है. That means not real. I'm not happy. If I'm happy, I would have laughed. Smile and laugh are the two different things. Smile is मुस्कुराना, laugh is हंसी, हंसना. We can easily find out कि कौन झूठा हंस रहा है, कौन रियल हंस रहा है, कौन आपको झूठा से रेस्पेक्ट दिखा रहा है, कौन नहीं दिखा रहा है. एटलीस्ट आई कैन अंडरस्टैंड. 40 साल होने हुआ हूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड पीपल व्हेन आई सी डिफरेंट. लाइक आई हैव बीन इन टच ऑफ एजुकेशन फॉर द 15 and 16 years and I have been dealing with the people of this age, 14, 15, 16, 17, 18. So I have gone through this situation. I can understand this. This poem is very much effective for those people. Now, to laugh with only my teeth and I shake hands without my heart. I have learned to shake my hands without her. I mean, sometimes the poet says, father said, I have also learned to say goodbye when I mean good riddance. मैंने सीख लिया है झूठ बोलना. Oh, goodbye my friend, जबकि मैं उनमें बोल रहा हूँ जा यार, जा, पीछा छोड़. So, I have also learned to say glad to meet you. किसी को साथ मिलने के बाद पार्टी में देखो आदमी एक दूसरे के साथ मिलता तो कोई नहीं आजकल. Everyone busy in the mobile phone. They are टक 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 अपना काम कर रहा है. Everyone is on the mobile. Suddenly introduce हो गया, खत्म हो गया, पार्टी खत्म. Oh अच्छा अच्छा अच्छा, your friend, okay, nice to meet you, glad to meet you. But you are not glad because you haven't met. आजकल तो घरों में 4 लोग बैठे हैं, बात नहीं करते, अपने मोबाइल में लगे पड़ते हैं, तो पार्टीज में तो बड़ा मुश्किल ही होता है. So people have learned to say that I am glad to meet you without being glad. Happy तो हुआ नहीं और बोलते हैं वाह glad to meet you, nice to meet you. व्हाट्सअप स्टेटस बनाने के चक्कर में बहुत सारे, कोई तो किसी को भगवान बना देता है, कोई किसी को फादर बना देता है व्हाट्सअप स्टेटस में, ताकि लाइक मिले, लोग इमोशन समझे, वाह ये आदमी कितना अच्छा है, ये लड़की कितना अच्छी है, कितनी अच्छी है. ये स्टेटस को मिलाने के लिए, फेसबुक में स्टेटस देने के लिए, फेसबुक में बहुत सारा देखा होगा, किसी को बर्थडे विश करना है तो अपना फोटो पहले चेक करिए वेदर उस फोटो में शी इज गुड और नॉट, ही इज गुड और नॉट. सो जिस पर्सन को विश करेगा वो आदमी पीछे खड़ा है, उसको विश किया कि नहीं पता नहीं. चलो एनीवेज, तो पीपल हैव लर्न. नाउ फादर सेड आई हैव लर्न टू से ग्लैड टू मीट यू विदाउट बीइंग ग्लैड, एंड टू से इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू आफ्टर बीइंग बोर्ड. किसी आदमी के साथ पार्टी में बात में नहीं किया, वो इधर बैठा, मैं इधर बैठा हूँ, मोबाइल में लगा हुआ हूँ, जब खत्म हो गया, ओ हो मीट माय फ्रेंड, ओ या माय फ्रेंड, हाथ मिला लिया, हाँ इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू, मन में तो आ गया समय बर्बाद करने. सो ए काइंड ऑफ थिंकिंग लाइक द पोएट वांट्स टू से दैट आई एम नॉट ग्लैड बट आई से दैट आई एम ग्लैड टू मीट यू. इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू, आई से बट आई डोंट मीन इट बिकॉज आई एम नॉट, इट वाज नॉट लाइक अ नाइस टॉकिंग टू यू बिकॉज आई वाज बोर्ड विद. नाउ father at the end requests his son कि बेटा, but believe me son, I don't want to learn all these things. I want to be what I used to be. मैं वो बनना चाहता हूँ जो मैं पहले हुआ करता था. I want to be what I used to be when I was like you. जब मैं तुम्हारे जैसे था. It's a metaphoric comparison of the two different generation of a father and generation of a son. ये है दो comparison, beautiful comparison of the two different generation. कहता मैं वो बनना चाहता हूँ जो मैं पहला था, जो मैं तुम्हारे एज में था. आई वॉन्ट टू बी व्हाट आई यूज्ड टू बी, मैं हुआ करता था. नाउ व्हेन आई वाज लाइक यू, आई वॉन्ट टू अनलर्न ऑल दिस म्यूटिंग थिंग्स. ये मैं उन चीज़ों को दोबारा नहीं, जो सीख लिया है गलत चीज़ें को हटाना चाहता हूँ, अनलर्न करना चाहता हूँ. नॉट टू लर्न ऑल दिस म्यूटिंग थिंग्स, दैट फैब्रिकेटेड थिंग्स, दैट डुप्लीकेट थिंग्स, दैट ऑर्नामेंटेड थिंग्स. जो बाहरी सजावट है उसको मैं हटा देना चाहता हूँ, मैं सीखना, अनलर्न करना चाहता हूँ. मोस्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू रीलर्न, मैं दोबारा सीखना चाहता हूँ. क्या? हाउ टू लाफ, कैसे हंसते हैं.
For my love in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs. I want to laugh again. I want to learn how to laugh, because now when I go to the mirror and I look at my mirror and I smile and laugh, my teeth, I'm showing my teeth. At the beginning I said smiling and laughing, showing the teeth. Now the father says, I want to relearn how to laugh, because now when I go to a mirror and stand, I laugh, it looks like the snake pointing out and taking out its tongue. Now snakes bear fangs, लगता है कि सांप का एक वो क्या कहते हैं, मुंह निकला हुआ, जीभ निकला हुआ बाहर. That means जहर उगलना, duplicate face, duplicate smile, not real happiness. Now the end of the line ekdam brings your heart, from the top, like you show me, son. You show me, son. Beta mujhe dikhao how to laugh, because a son is very small, like young age, is innocent age. Beta, sikhao mujhe how to laugh. Show me how I used to laugh and smile. मुझे दिखाओ मैं कैसे हंसा करता था, मुस्कुराया करता था. How I used to smile and laugh. And once upon a time when I was like you, once upon a time when I was तुम्हारी उम्र का मैं था, मैं कैसे हंसा करता था, मैं कैसे हुआ करता था, मुझे सिखाओ. Here we come to an end of this beautiful poem. The poem doesn't have any rhyming scheme. It is a beautiful enjambment or beautiful free verse. This poem a rhyming scheme.